अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। ईद अमेरिका में कैसे मनाई जाती है ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, एंड दिस इज़ गोना बी माय फर्स्ट व्लॉग, सो लेट्स चेक इट आउट। सो वी हैव अराइव्ड द फार्म। लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ पार्क कर ली हैं बाहर। बहुत खूबसूरत दिन है आज, और इस खूबसूरत दिन में आपको हम फार्म की ज़रा सैर करवाते हैं। अपस्टेट न्यूयॉर्क में ये फार्म है, और यहाँ पे आप अपने जो है ना वो जानवर बुक करवाते हैं पहले, और फिर यहाँ पे कुर्बानी होती है। ये यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। फैमिली के लिए भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और ये बकरे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जानवर हैं कुर्बानी के, और ये बकरों की कान के ऊपर आप देख रहे हैं नंबर लगे हुए हैं, और नंबर के हिसाब से पता चलता है कि कौन सा बकरा किससे बिलोंग करता है। ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर। और इन बकरों को देखने के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, ऊपर कैमरे लगे हैं, और कैमरे से मॉनिटर करते हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप एन आई ऑन ऑल ऑफ देम। एक फ़िज़िकल बंदे का होना लाजमी यहाँ पे, लेकिन इट्स हार्ड टू फाइंड पीपल। सो व्हाट यू डू इज़ यू इंस्टॉल द कैमरास ऑन टॉप ऑफ इट। एक ट्री के ऊपर कैमरा लगाया हुआ है, और हर जगह पे तो आप मोबाइल के ऊपर से देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या सीन। और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, और फैमिलीज़ का भी यहाँ पे अच्छा सेटअप बना हुआ है। बच्चों के लिए भी खेलने की जगह है, और इस साइड पे कुर्बानी का इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे सारा कुर्बानी का इंतज़ाम है। यहाँ पे बकरे लेके जाके हम ज़िबा करते हैं, और यहीं पे हम साफ़ करेंगे इसको आज। Hey there! Sit inside! पैसेंजर एंड पे रह गए, और ये सवारी छोड़ के जा रहे हो। और ये जनाब ड्रेसेस हैं। इफ़ समबडी वांट्स टू बाय एनी ड्रेस दे कैन बाय। मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है भाई कौन सा ड्रेस कैसा लगता है, लेकिन दिखने में सारे अच्छे लग रहे हैं। अमेरिका में भी आप ईद के ड्रेसेस ले सकते हैं। और ये कुछ चीज़ें, इसमें चूड़ियाँ हो गई, जूते हो गए। ये इनका लोगो है एंटीक थ्रेड के नाम से। आपकी वेबसाइट भी है? वेबसाइट भी है www.antiquethread.com। तो अगर आपने परचेज़ करना है तो आप जा सकते हैं eiduladha.com के ऊपर। I have met this Farhan. He followed me on TikTok and he just met me. तो फरहान भाई आपने कैसे मुझे ढूंढा है कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ? So first thing first, I follow him on TikTok all the time, all the good tips that he gave it to us. And फरहान भाई आप क्या करते हैं? So I'm in a web automation, software engineering. So it's very good that we have something similar in IT. That's amazing. It's one of the new fields in the market, right? Yeah. Very well. And if anybody wants to learn it, what's the career path they can follow? It's not impossible. Anybody could do it. I'm personally from the accounting background. If I could do it, anybody could do it. So it's not a big thing. It's just programming. You have to learn it. Of course, it's new things. That's amazing. Thank you so much, Farhan bhai. Inshallah, people can get some information out of this vlog that I'm trying to create, and your input is definitely going to have a lot of people in the same space. Yes. So it's amazing to know this field. Thank you. Run it. Just run it. My son is looking at them for the first time. ये हमने क्या किया अभी बताओ ना। I'm recording you. So why did we do that? Huh? Because of? Oh wait, is that? Make sure. So you clean it so that इसके ऊपर अगर आपका जो है ना वो किसी किस्म का बाल है
तो स्किन से उतर जाता है। हाँ जी, मुझे लगता है ताहिर भाई को अपनी रियल जॉब छोड़नी पड़ेगी। कैसे है? लाख शुक्र सर। आपने तो इधर ईद पढ़ानी थी। चलाना ना ब्लूपर्स भी ये ब्लूपर्स की वीडियो। ये छुरियाँ तेज हो रही हैं। छुरियाँ तेज करा लो। 5 रुपए $5 $5 गर्मी कर दिया आपने उसको पंखा बंद करके। वाह दिल भाई, आपने तो माशाल्लाह बड़ा क्लीन काम किया है। ऐसा काम तो हमने पहले कभी नहीं देखा कि ऊपर जो है उसका लेबल किया जाए, साफ़ सुथरे तरीके से उसको पैक किया जाए और उसके बाद जो है बैग के अंदर डाल के इसको क्लीन तरीके से बंद कर दिए। और अब चूँकि धूप है तो इसको फ्रीज़र के अंदर रख दिया जाएगा। जब शाम को हम निकलेंगे तो ये साथ ले जाएंगे। और ये डेडिकेशन जो है एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है वही कर सकता है। बस माशाल्लाह 2 साल, कितने साल हो गए इनको स्टार्ट किए हुए? ये अब टेक्निकली दूसरा साल, लेकिन लास्ट ईयर कोविड था तो उसमें से नहीं किया तो। अच्छा, 2 साल में माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिया है। आई रिमेंबर द टाइम 2 साल पहले मैं आया था तो उनके पास जानवर भी कम थे, स्टाफ भी कम था। अभी माशाल्लाह जानवर भी ज़्यादा हो गए हैं, लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, एक फैमिली की कम्युनिटी दी जा रही है, यानी कि एवरीबॉडी कैन एंजॉय हियर। और काम तो आपने देख ही लिया है कि कितना साफ़ सुथरे तरीके से हो रहा है यहाँ पे। तो माशाल्लाह एक तरह का सदका जारिया है। और क्रेडिट गोज़ टू यू नो एवरीबॉडी वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। आदिल भाई इज़ वन ऑफ देम। ये हमारे मैन ऑफ द मैच है यहाँ पे। He did most of it, huh? Yeah, he did most of it. He's becoming professional day by day. उमैर भाई, आपके पीछे मोटिवेशन क्या है ये करने की? आपको डर नहीं लगता करते हुए? ज़िबा करते हुए? हमारी तो टांगें कांप रही थी। क्यों अदनान भाई? Was it your first time? It's your second time. But were you able to do it like with confidence this time? Malik was like feelingless person there. Malik भाई कितनी दफ़ा कर चुके हैं आप ये? कितनी दफ़ा कर चुके हैं? कई सालों से कर रहे हैं। कई सालों से। आज दिन में कितनी दफ़ा कर चुके हैं? 11वें। कितने करने का प्लान है आज? 32। टारगेट 32 का है। कैलकुलेशन 32 की करके आए हैं। 32 33 फिर एक वेड़ा है। अच्छा, वेड़ा कब करेंगे? एंड पे? वो जो एंड पे रखा हुआ है, आज करना है कल करना है? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि कब खत्म होगा। सही है। काशिफ भाई, आपने कुर्बानी की है कभी पहले? करते हैं। अच्छा, आतिर भाई क्यों डरा रहे हैं उनको? पहले वो डरे हुए हैं। शुक्र है कुर्बानी हो रही है, इससे जान छुड़ी। मैं पहले से डरा। आतिर भाई आपका कौन सा है? अपने बकरे पे नज़र रखे ज़रा, किधर है? मेरे जो है ना गाय है। अच्छा, गाय है। बकरे से आपका दिल नहीं भरता शायद? 46,000 किलो? नहीं, जिप कोड बता। ये बिरयानी के साथ ये क्या है? निहारी। वीडियो बना ली मेरी, अब मैं और डाल लूं। ये सारा आतिर भाई ने बनाया है। आतिर भाई, कितनी मेहनत करना पड़ी है आपको? बस देखो पतला हो गया।
ये मटन कढ़ाई है, अच्छा माशाल्लाह। और ये क्या है? ये पुलाव है, वो भी पुलाव है आगे। वो भी पुलाव है। ये देखें माशाल्लाह फुल टाइम पार्टी हो रही है। We have some new family and they came to the farm for the first time and we want to find out the reason what made them come here. So you're 18 and it's going to be your first time here? Yes. So how excited are you? I'm pretty excited for the experience. It's a really big part of our culture and I'm ready to put my hands on it. And are you kind of scared as well or no? I'm a little scared about, cutting, make sure the lamb doesn't get suffering. That's the only thing that I'm scared about. Let's meet Tahir Bhai. He's the owner of this place, Tahir Farms, and he's going to tell us about his motivation behind setting this up and what exactly was the reason and how he's managing it in the future as well. So Tahir Bhai, कुछ बताएं अपने इस फार्म के बारे में हमें। पाकिस्तान में कुर्बानी की हुई है, बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब जिन्होंने इंडिया में, बांग्लादेश में, सारे मुस्लिम ममालिक में कुर्बानी कर चुके हैं, मगर यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। या तो स्लॉटर हाउस जाएँ आप, जहाँ पे आपको you just pay the money and you pick up your meat. So we wanted to create something that is a family event where all families can come by and enjoy the day while play with their animals before we do the Qurbani, the good old style, and then process all the meat in one go while turning it into a family event. So you're not going in, spending an entire day just butchering meat. It needs to be about family, it needs to be about friends, it needs to be about having a good time. So we're available to within 24 hours we should be able to get back to you. You can either reach out to us at tahirfarm.com or you can reach out to our Instagram handle, which is Tahir Farm as well. And we also are on Facebook under Tahir Farm. So any of those, tahirfarm.com, you can go to it, click on WhatsApp, contact us or email us, and we should be able to get back to you within 24 hours. If you have a special request, even for Qurbani, you want a certain breed, you want certain types of animals, we can accommodate it as long as we have a little bit of a heads up. So that's it. We're here to please because we want you to have fun just like how we're having fun. Mashallah, it's a pleasure having you here, and it was my pleasure as well to come down here with the family and enjoy this. Hopefully inshallah we'll meet you in the future, and most of my followers who follow me on Instagram and TikTok, they can be able to reach out to you as well. Thank you so much for being part of this journey with me. No, thank you for allowing me to be a part of it, and thank you for everyone who's here today. So it's been a great honor. Thank you. Thank you. So. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Muhammad Zaki reporting live from Tahir Farm. I'm joined by my esteemed colleagues and peers. Alhamdulillah ta'ala, we are conducting about approximately 33 goats and 4 lambs, Qurbani sacrifice, udhiyah, for the sake of Allah, for the sake of God today. And thank God we are here all gathered as a nice family function. And I just want to talk a bit about the importance of having these family functions. So as many of us sitting here, we're either first generation or second generation Muslims living in America. And we know the reality back home, wherever that may be, whether that's Pakistan, India, Bangladesh, Jordan, Lebanon, wherever back home may be for many of us immigrants, that Qurbani and eiduladha specifically is a very big part of not only our culture and our religion, but also our identity. So back home, when we celebrate Eid, throughout the streets, we see animals being sacrificed. From a very young age, I know some of my colleagues and peers here can comment on that as well. They just run through the streets and the gullies on Eid, and they see cows being slaughtered here, goats over here, sheeps over here. Whereas in America, we have some type of sanitation and health code system, which defines us to only certain locations where we're able to come and practice our religious obligation. So the importance of coming here as a family is quite very simple. I talk to 2 kinds of people on a regular basis. The first kind of person is the person whose kids have never seen a Qurbani in their life. Qurbani being the sacrifice of an animal. For example, when I was a young kid, my father took me to the Patterson slaughterhouse and showed me the Qurbani. So this reality doesn't apply to me. I'll get to those people in a second. There are those Muslims living in America whose kids have never seen an animal being slaughtered. Sure, they have meat, they have karai, they have barbecue, they might go to Chick-fil-A, they might go to halal restaurants and eat meat, but they've never seen where the meat actually comes from. And we know that this is a fundamental part of not only our religion and our culture, but our identity as American Muslims. The importance of doing it here, another point I want to stress, is that our kids growing up in this liberal Western society, there's this push for us to be into the melting pot.
to assimilate into Western and liberal values. And not only is it dangerous for our kids, but we have to think a little farther down the road. The Sahaba Ikram, they would sit in Mecca, they would sit in front of the Kaaba, and they would talk about Rum. They would talk about wars of the Persians and the Romans that are happening for thousands and thousands of years. Why? Because they were visionaries. They were visionaries. They were looking not only, yes, how do we solve today's problems, but how do we solve the problems that are going to come tomorrow? So if you have the means and you have the effort, please, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, give and donate abundantly. And regarding these 10 days that just passed, specifically the day of Arafah, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he says that no dua is rejected on the day of Arafah. These are very important days that we have to take acknowledge of, especially these days of festival. If we show our kids that this is your birthday, we're going to go all out, we're going to get a bouncy house, we're going to invite a clown, but on Eid, your kids are wearing a t-shirt and jeans in the masjid. Let's be honest now, come on. Yeah. What are you teaching your kids? You got to set the values in your children for your coming generation. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for our shortcomings, forgive me for any of my shortcomings, and allow us to benefit from this holiday and this festival. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen bi rahmatika ya arhamar rahimin. So I'm enjoying here with all the people, all the family members, and I get a chance to meet somebody. आपका नाम सबील अहमद हैं और ये शिकागो से आए हैं और माशाल्लाह ही इज़ वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब एज़ वेल. तो इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या मोटिवेशन थी यहाँ पे आने की और ये इस इवेंट के बारे में क्या सोचते हैं. जी सबील अहमद साहब, बताएं आप माशाल्लाह कैसा फ़ील कर रहे हैं और ये आपका फ़र्स्ट टाइम है यहाँ पे और आप कहाँ से आए हैं, कुछ अपने बारे में बताएं. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. So I am from Chicago, came here to this farm for the very first time. And the reason I came here, because I wanted to make sure that we Muslims, we create that environment which is very close to the Sunnah. Not like an artificial environment in which we give the zabihah to somewhere else, they process it and they bring it. Yes, we can do that too, that also fulfills. But I want to make sure that my family and Tarek's family and other Muslim families, that we actually do the zabihah with our hand. And that was the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. MashaAllah, our Tahir Farms over here, run by the families, the brothers and the families, they're doing an excellent job of reviving that sunnah, giving opportunity to the Muslims, especially the kids. And my kids had an excellent time. MashaAllah. So I hope and pray that you guys continue this. Not only you continue, we need to multiply this. Multiply this as well. Multiply this. Doesn't matter with what name and what business, but the concept should be there. Exactly. So mashallah, in Chicago also you get a chance to have such events there, like where families can come together and celebrate Eidul-Adha like the way we are celebrating here, or is it different there in Chicago? Well, it's almost the same. Chicago has more Muslims. We have about 600,000 Muslims in Chicago. That's great. And we also have like many farms just like this where people go there and they do the hand slaughtering. And for the Eid-ul-Adha, mashallah, we have like really big gatherings. Maybe 10,000 people coming, 5,000 people coming, more or less. But same concept though. But the important thing is we need to make sure that we go back to the Sunnah, go back to the Quran and the Sunnah, revive it, unite ourselves despite the differences. So that's when Allah's blessings, the honor and the unity will come in. And that is what is needed not only for the Muslims, but humanity is looking for the message of Islam, the guidance, the peace. So I hope and pray that with the spark of this farm of Tahir brothers, the Tahir farm, and other such farms and other such leaders, I hope and pray that inshallah Allah will keep on blessing our ummah. Ameen. ये इनका हैबिटेट है.